Hello, hi, good evening. Welcome to AkiCheck Wealthy. We are here to help you, guide you, motivate you, take you through a health transformation journey to ensure all your lifestyle disease conditions are taken care of. Hello, Ajay Kumar ji. Good evening. How are you? Hello, Mr. Chakravarti. Good evening. I hope you're doing well. I hope both of your blood sugars are under control and you're taking enough care of your health. Today's topic is going to be super interesting and it is going to help us with a lot of information, lot of quick, easy tips, easy handling, easy understanding. It is specific to the season we are planning to welcome all of us in our different regions. Let us wait for our AccuCheck Wealthy family, all of our members, and then we'll start today's discussion. Hello, sir. Good evening. Great. Let's wait till all our lovely AccuCheck Wealthy members join. Meanwhile, I would love to know rainy season is coming up. All of us would not have sufficient time to work out uh, due to weather conditions, due to work routine, due to household things, due to schools starting of our kids. So, what are we doing to ensure that our health is improved? How are we alternating our exercise patterns? What are we doing to ensure that nowhere in our diabetes management, health management, behavior management, lifestyle management journey, our routine, our exercise routine, our lifestyle routine is not hampered? Drop in your responses in the chat box, and I would love to know what is it that you all are doing to ensure all of these things are maintained. Meanwhile, let me welcome all our AccuCheck Wealthy family. Warm welcome and good evening. Great. Thank you so much for your responses. I'm eagerly waiting for everyone to join so that we can start with today's discussion. We still have about 5 minutes to start today's session. Our friends are talking to their coaches, looking out for a link to join today's session. Let's wait for them. Let's ensure that every single time we speak to our AccuCheck Wealthy family, we help them with unique ways to ensure their lifestyle, their health routine, their patterns are improved. Do drop in what is your plan for the rainy season? What are you doing to ensure your blood sugars are under control? I would absolutely love to know what is going to be your routine. What are the changes you're going to do in your routine to ensure good lifestyle, no fluctuations or blood sugar spikes, no weight gain, ensuring good healthy eating, keeping infections at bay. We'll discuss all of these things in today's session. Meanwhile, let's wait for our AccuCheck Wealthy users. So here we are planning to discuss on today's topic. Let's wait till all our AccuCheck Wealthy members join and we start with today's discussion. Can you all put in the chat box what is today's discussion about? I would love to know how updated you are on today's topic. It is seen on your screen, but if you still want to go through it and then tell me what is today's discussion, I would love to know in the chat box what is today's topic and what are your questions regarding today's topic. Meanwhile, let me greet my AccuCheck Wealthy users. Hello, Harshal ji. Good evening.
Thank you so much for joining today's session. Hello, Mr. Prakash. Good evening. Hello, Mr. Shrikant. Good evening. Great. Rainy season is here, and I'm sure everyone is worried. How will we balance our healthy eating? क्योंकि रेनी सीजन में बहुत सारी क्रेविंग्स हमें होती है, काफी सारा ऑयली फ्राइड स्वीट खाने का मन करता है. तो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू? वी नीड टू एंश्योर that we are doing on a regular basis so that our blood sugar spikes are not seen, our cholesterol levels are under control, our weight is managed, our heart related concerns are resolved, our hypertension, our blood pressure is under control. Let's think about all these things and start with today's discussion. Good evening and a warm welcome to all our AccuCheck Wealthy family. Thank you so much for being proactive, coming every week, talking to us, discussing on your health, your improvements, being an active participant in all our webinar sessions. Let's start without any further wait. So today's topic is about rainy season and diabetes management. We are going to understand that how are we going to manage blood sugar levels, how are we going to ensure our weight is under control, what all measures we need to take to ensure the blood spikes do not happen. In today's session, we will cover why is diabetes management important in rainy season, what are the major tips which all of us need to follow, what are the dietary considerations, and what are the take-home tips for all of you. So let us understand कि rainy season में exactly होता क्या है. Very important to understand that it is a season where a lot of infections in your body can catch. Number one. Number two, transition of season from summer to rain, that is from a higher temperature or to a hotter temperature to a cooler temperature, usually leads to changes in your body, in your system, in your operational mechanism of your internal organs. Your voluntary and your involuntary activities get some changes because of weather change. Now, it all depends on the type of immunity you have. It all depends on how healthy are you eating. Are you consuming enough amount of water? Are the nutrients which are required for your body sufficient, which are creating an impact on your health? So, in this session, we will discuss some practical tips and strategies for managing your blood sugar levels, your weight during the rainy season. Now, let us understand before going to tips, why is diabetes management important in rainy season? Now, basically, जो diabetes है, उसको rainy season में manage करना बहुत important है. क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स मतलब जो परसेंटेज ऑफ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा हाई होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बिकॉज ऑफ विच इंटरनली योर ब्लड शुगर लेवल्स कैन फ्लक्चुएट. द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस जैसे फंगल इन्फेक्शंस या आपके इन्फेक्शंस ड्यू टू हाई ब्लड शुगर्स कैन कॉम्प्लिकेट योर डायबिटीज फंक्शंस. आपके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो भी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं इन योर एंटायर डायबिटीज मैनेजमेंट जर्नी बिकॉज ऑफ दीज फंगल एंड डायबिटीज प्रोन इन्फेक्शंस. In addition, the rainy season can also make it more difficult to maintain a healthy lifestyle due to limited outdoor activities and increased cravings for comfort food. Now, let us understand what are the common tips for managing diabetes in rainy season. Okay, take care of your feet. Very, very important क्योंकि डायबिटीज में सबसे ज्यादा आपका जो इम्पैक्ट है रेनी सीजन में वो आपके फुट एरिया या आपकी जो फीट है उन पे होता है. People with diabetes are often at a higher risk of developing foot infections and foot ulcers if they are left untreated, or if it happens over a prolonged period of time. It can lead to a condition which is known as diabetic
neuropathy. What is neuropathy? Basically the nerve sensation of your feet, of your legs near your feet may get hampered. So the nerve optical functioning will reduce. उसको कहते हैं diabetic neuropathy. To avoid the risk of infections, we have to ensure that we wear footwear that fits you well. It is not too tight or it is not too loose. Tight footwear can hamper blood circulation, and loose footwear can lead to wrinkles that develop into foot blisters. Wash your feet, keep them dry, and use a foot powder if required. If you have to wear socks, carry a few extra pairs so that you can change them into dry ones throughout the day, so that there is no fungal infection, there is no risk of any diabetic prone symptoms or any kind of diabetic neuropathy. Regularly inspect your feet for any signs or cracks, lesions, blisters, or welt. I would like to take a minute here and discuss on my personal experience with our users. सबसे पहले तो काफी सारे यूजर्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हम कौन से शूज ले या हम कौन से फुटवेयर ले जिससे रेनी सीजन में वी विल नॉट हैव diabetes related complications. So let me tell you, shoes should be completely covered. So wearing slippers, sandals, chappals, all of these things needs to be avoided in the rainy season. A best option is rain prone sports shoes. Okay. For older people above 70, if they feel that sport shoes are too heavy for their feet, you get doctor sandals or you get doctor chappals or you get doctor based shoes जो आपको मेडिकल फार्मेसी में या ऑनलाइन कोई ना कोई साइट पे मिल जाएंगे. इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल रेनी मटेरियल जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको स्लिप होने के चांसेस नहीं होते और आपका जो पूरा पैर है या आपके पूरे फीट है दे आर इंटैक्ट. उनको कहीं भी पानी के वजह से या मड के वजह से, डस्ट के वजह से या बाहर जो आप चल रहे हैं उस वजह से कहीं भी एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट का कांटेक्ट नहीं होता. सो द फीट आर कंप्लीटली इंटैक्ट, they are closed. Okay, and this type of footwear is ideally recommended. ठीक है, अगर आपको ये चाहिए कि कौन सा ब्रांड कहाँ का ले, कैसे ले, आई एम सो सॉरी, वी विल नॉट बी द राइट पीपल टू टेल यू, बट आई कैन टेल यू कॉमन साइट्स जैसे Amazon, Flipkart, Myntra, all of these places will have rainy footwear which is specially for rains, and it is diabetic foot special sandals, chappals, shoes. अगर आप कोई भी एक शूज के शोरूम में या शॉप में चले जाए, नॉर्मल स्टोर में भी चले जाए, वहां पे आपको इजीली रेनी शूज मिल जाएंगे. बूट्स अवॉइड कीजिए क्योंकि उनसे स्लिप होना बहुत इजी है. दैट्स द रीजन इट शुड बी स्पेशली मेड फॉर रेनी सीजन. Let's see what is the next tip for managing your diabetes or your blood sugars in rainy season. Do not skip your exercise routine. Please talk to my team, talk to your health coaches, and ensure that whatever you're doing or whatever kind of exercise, they can give you an alternative. They can provide you an option जो आपको help करेगा to ensure that nowhere in your actual routine you're missing out on your daily blood sugar management. If you can't go out of home, if you need to drop your kids to school, or if your region has heavy rainfall throughout the week, आप health coaches से बात कर सकते हैं. We have some flexibility exercises, we have some things to do at home, we have some chair exercises where if you're not able to bend down, we have some yoga options. You can use all of this, and the links of this are readily available with your health coaches. Please speak to them. They will definitely help you in understanding आपके एज के हिसाब से, आपके करंट रूटीन के हिसाब से, आपके ब्लड शुगर के हिसाब से कौन सी और कैसे टाइप की एक्सरसाइज आपको करनी है.
ठीक है. Even if you can't go out, some kind of exercise is important. कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको सिंपल 4-5 चीजें बताती हूँ that you can do at home. Number 1, if you are staying at home and there is heavy rain, you can't go out, सिंपल चीज, फ्लोर को मॉप करना, फ्लोर को क्लीन करना. इस तरह से, ये नहीं कि आपको वैक्यूम क्लीनर लेके करना है, उसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर आप एक कपड़े से या ब्रूम से, झाड़ू से अगर आप क्लीन करेंगे, इट विल include a lot of your bodily movements, like bending down, getting up, twisting on your sides. All of these things will help you at least keep yourself active, and this won't lead to any kind of damage. Number 1. Number 2, fluctuations in your blood sugar management. And number 3, spikes. Very important. Okay. It is very essential to understand this. योगा आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है. आप नॉर्मल यूट्यूब में जाएंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे, फेसबुक, कोई भी आप साइट पे जाइए और बस योगा टाइप कीजिए, डायबिटिक योगा टाइप कीजिए, आपको काफी सारे लिंक्स मिलेंगे. जरूरी नहीं है कि आप वो पूरा एक्सरसाइज रूटीन करना है हमको, आप कर सकते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ नी इश्यूज, वेट इश्यूज, स्टमक प्रॉब्लम, यू कैन बेंड बिकॉज ऑफ लेग पेन, या ब्लड शुगर हाई है तो आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते. बट वॉचिंग इट and at least doing initial warm up of 10 minutes and end closure of 10 minutes, you can do that. तीसरी चीज, अगर आप किसी बिल्डिंग या सोसाइटी में रहते हैं तो इतनी बारिश तो नहीं होती कि हम अपने ही कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में राउंड नहीं ले सकते हैं. दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑप्शन विच यू ऑल कैन ट्राई. प्लीज अपने कंपाउंड में, अपने घर के आसपास राउंड्स लीजिए. 5 rounds is also sufficient. That is 20 minutes of walk. Please do that. Next important thing is that अगर आप एक कॉम्प्लेक्स में या एक नॉर्मल बिल्डिंग में या रो हाउस में रहते हैं, आपको ये काफी दिखेगा कि फ्लोर्स है चढ़ने उतरने के लिए. तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लिफ्ट, यूज क्लाइंबिंग एज योर सोर्स ऑफ एक्सरसाइज. थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि आप 5वें फ्लोर पे रहते हैं तो पुनः 5 फ्लोर चढ़ के 5 फ्लोर उतरना है जब भी आप ऊपर नीचे कर रहे हैं. एटलीस्ट स्टार्ट विथ इनिशियल 2 फ्लोर्स. 2 फ्लोर्स चढ़ के 2 फ्लोर्स उतरिए, बचे हुए 2 या 3 फ्लोर्स में आप एलिवेटर यूज कीजिए, लिफ्ट यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम. बट प्लीज एंश्योर, द ओनली आइडिया ऑफ टेलिंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस इज टू एंश्योर कि आप घर के घर में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, एक्टिविटी, स्किपिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, कुछ ना कुछ चालू रखे और आपके हेल्थ पर, आपके ब्लड शुगर पर इसका इम्पैक्ट ना आने. ओके. Do exercises that you can easily do indoors. Walking inside the house, stretching, warm-up exercises, yoga, skipping, spot jogging, jumping jacks, squats, lunges, crunches, whatever you can comfortably and safely do at home. Okay. Keeping up with your exercise routine will ensure you manage your weight better as well as improve your blood sugar levels. Let's see to the third and the most important tip, क्योंकि ये ऐसी टिप है कभी कभी हम सभी लोग इसका कंट्रोल लूज आउट कर देते हैं, एंड दैट्स द रीजन बॉडी पे इम्पैक्ट होता है. प्लीज प्लान योर मील्स. Very, very important. If you do not plan your meals, intake will be higher. Pay attention to what you're eating. The monsoon season is known to cause stomach upset in many people. So it is best you keep an eye on what you're eating. It is important to understand that if you are getting cravings to eat fried snacks, pakoras, bhajiyas, pizzas, hot beverages, मल्टीपल टाइम्स, जैसे ठंड के कारण या बारिश के कारण चाय काफी पीते हैं और वो चाय में काफी सारी चीनी होती है, तो वी नीड टू अवॉइड and pay attention to what we are eating throughout the day.
I would like to give some tips जो हमारे काफी users follow करते हैं, and that has helped them benefit in their entire health routine. So the first important thing is that अगर आप चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, switch it to green tea, switch it to flavor tea. और ये सारी चीजें मार्केट में काफी महंगी मिलती है, तो मैं मेरा खुद का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. You can note this down as a special tip. Very easy, homely Ayurvedic kadha, we call it. This was initiated when we started for immunity based drinks for COVID, after the COVID season, as an immunity booster. And this was a natural booster which I had introduced within my team. First thing, take a glass of water, keep it for boiling, add 2 to 3 cloves, um, pinch of cinnamon, pinch of black pepper, 2 to 3 cloves, and add pinch or less than a pinch of turmeric, and boil this entire thing for hardly 30 seconds, 25 to 30 seconds. इससे क्या होगा, वो जो फ्लेवर है सारे आइटम्स का वो कैप्चर होगा, एंड दैट विल मेक or give you a feeling of you are having tea. Okay, number one. Number two, गरम पानी या जो गरम लिक्विड आप ले रहे हैं, उस वजह से ऐसे लगेगा कि आप चाय ले रहे हैं. एक्सक्यूज मी. इस वजह से ऐसे लगेगा कि आप चाय ले रहे हैं. सो वी नीड टू एंश्योर दैट दिस इज टेकन रेगुलरली. दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को, इसको आप बॉईल कीजिए 30 सेकेंड्स, आधे घंटे तक वो सारी जो चीजें हैं पानी में रहने दीजिए, एंड देन यू स्ट्रेन इट एंड यूज इट. ओके, ये इतना टेस्टी लगता है, आप बिलीव नहीं करेंगे. इट एक्चुअली टेस्ट लाइक हर्बल टी, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि इसमें सिर्फ हर्ब्स है, इसमें कोई फर्मेंटेड टी या टी का बैग नहीं है. अगर आपको फिर भी चाय की क्रेविंग हो रही है, तो ये जो आप कॉन्कॉक्शन लेंगे 1 ग्लास, उसमें आप थोड़ा सा ग्रीन टी का जो डिप का पाउच आता है वो डिप करके यूज कर सकते हैं. This is a homely tip, and this has helped me, my family, and my entire team to stay safe from COVID. Please try this. This will not just impact your health, but will also help you stay, active throughout the day and keep you at par from a lot of infections. Okay. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी कि आई नो दैट बारिश में हम सभी ये चाहते हैं कि हम कुछ नमकीन मसालेदार और पकोड़े भजियां और ये सारे आइटम्स हैं वो काफी सारे ले. सो आई हैव अ सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट जिसको मैं कहती हूँ हेल्दी भेल. ठीक है, तो ये जो भेल है एग्जैक्टली हमारी जो बाहर मार्केट में मिलती है उस भेल की तरह नहीं है. ये हेल्दी वर्जन है उस भेल का. बेसिकली एक फीस्ट फुल आपको मुरमुरा या मूरी या कुरमुरा या पफ्ड राइस लेना है. उसमें आपको अगेन फिस्ट फुल ऑफ स्प्राउट्स, कोई भी उबले हुए या कच्चे स्प्राउटेड मूंग, मटकी, चना, जो भी है हैंडफुल वो आपको लेना है. उसमें घर में जो भी सब्जियां हैं, एनी वेजिटेबल्स, टमेटो, कैरेट, बीटरूट, अनियन, खीरा, एनीथिंग व्हाट इज अवेलेबल, chop them finely, add it to this, add masalas whichever you like, chaat masala, red chili powder, black pepper, salt, all of these things. Add all of these things. Ensure that the masalas which you add are a little more, okay, compared to जो नॉर्मल बाहर मार्केट में मिलता है. थोड़ा स्पाइसी टैंगी उसको बनाइए. एंड हैव दिस इज अ हेल्दी वर्जन ऑफ द भेल. कैलोरी इनटेक ऑफ दिस इज लेस देन 50 किलो कैलोरीज इफ यू टेक 1 सर्विंग, एक कटोरी. तो अगर बाहर मार्केट की भेल देखें आप तो वो काफी हाई होती है कैलोरीज में. इसमें आप सिंगदाना, चना, पीली दाल,
रोस्टेड येलो मूंग दाल, चना दाल भी ऐड कर सकते हैं. इट रियली टेस्ट्स वेल. Please do try these two recipes and don't forget to tell me and my team how did it help you in the rainy season to keep you away from your cravings. All right. ओके, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि कभी कभार चीट करना या हमारे फेवरेट आइटम्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वंस इन अ वाइल यू कैन एंजॉय सम पकोड़ास, सम भजियाज एंड सम फ्राइड स्नैक्स विथ योर फैमिली, बट मेक श्योर यू डू नॉट मेक इट अ डेली हैबिट. जैसे हर शाम, क्योंकि बारिश का महीना है, तो एवरी इवनिंग या हर वीकेंड पे हम ये फ्राइड स्नैक्स ले रहे हैं. आपके बॉडी पे इसका काफी इम्पैक्ट होगा. योर ब्लड शुगर्स में स्पाइक अप, योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उनके लेवल्स अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं. प्लीज इंश्योर कीजिए अगर आप भजियां ले भी रहे हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 हैंडफुल. तो 1 हैंडफुल में आपके 4 पकौड़े आ सकते हैं, तो उतने आप ले सकते हैं. उससे ज्यादा क्वांटिटी हमें वंस इन अ डे नहीं लेनी है. Best snacking items for rainy season is butta, or you call it sweet corn. Boiled है या बाहर readily मिलता है वो है. Toasted peanuts, सिंगदाना या चना, उसको हल्के से टोस्ट करके आप उसको फ्लेवर देके वो भी ले सकते हैं. ओके. Peanut contains a lot of fiber, healthy fats, and proteins. Sweet corn has good probiotics and helps in digestion, as well as improves metabolism and reduces bloating. While sprouts are loaded with enzymes, fibers, and protein and are very low on calories. तो मैंने जो आपको स्प्राउट की भेल बताई है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल homely recipe which you can try that can help you improve your overall health. Take care of your eye health. Please understand, people who are diabetes prone can have eye infections because of diabetes, especially in rainy season, because there are a lot of fungal microbial infections which are around you, and if it is left untreated or चेक नहीं करवाया सही टाइम पे, तो आंखों को आपके इन्फेक्शन होना उस वजह से भी पॉसिबल है, विच कैन फर्दर लीड to diabetic retinopathy. It is a major problem. Please ensure कहीं भी आंखों में प्रॉब्लम हुआ, इमीडिएटली आप आपके डायबिटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, एंड देन ही विल टेल यू हाउ टू टेक केयर ऑफ all of these things. Okay. What are the common eye issues which occur because of diabetes? One is blurry vision, glaucoma, cataract. So it is important to pay attention to your eye health and avoid any infection as much as possible. Schedule an appointment with your ophthalmologist to get a general look at your eye health. Wash your hands regularly to ensure you do not spread any germs to your eyes. Now let us understand the next most important point which we have been telling to most of you. I think काफी सारे आप में से लोग हैं, because of work, because of घर के काम, because of your job, because of a lot of physical activity, आपको ये problem होती है. Let's discuss on this. Treating your wounds and cuts immediately. When you have diabetes, you are more prone to developing wounds and sores. Also, for people who have diabetes, wounds take a longer time to heal. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. रेनी सीजन में ऑलरेडी काफी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको सराउंडेड है. आपके आप घर में है, आपको नहीं हुआ होगा, बट पीपल इन योर फैमिली आर देयर, पीपल एट योर होम आर देयर, जो डेली काम पे जाते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते कूदते, स्कूल में जाते हैं, कहीं ना बाजार में कहीं ना कहीं जाते हैं, एंड दे come in close contact with this microbes or this infections or this bacteria. अभी क्या होता है, because you have some cuts, because you have some wounds, एक तो to get it cured it will take a longer time. ठीक है. सेकेंड, उस वजह से जो इन्फेक्शन
आपके आसपास है, वो भी आपको जल्दी कैच कर सकता है. So these are the two impacts which lead to your diabetes management because your wounds or your cuts are not immediately treated. Tips for managing diabetes in rainy season. Treat your wounds and cuts immediately. Leaving the wounds untreated for a period of time can cause more infection and may lead to severe complications. Inspect your skin regularly, if possible, on a daily basis to check for any cuts, wounds, or bruises. If you notice anything like this, make sure to visit your doctor and get these checked right away to avoid any further risk और इन्फेक्शन. ओके, तो प्लीज ये याद रखिए, छोटी सी खरोच भी अगर आती है या कहीं कट हो जाता है, या घर में हम सब्जी काटते हैं, कुछ भी घर के नॉर्मल काम करते हैं, उसमें भी अगर छोटा सा कट भी आ जाता है, प्लीज एंश्योर take care of that wound, put on a cream, or put tapes, cover it with some kind of medication, but ensure कि जल्द से जल्द आप उसको ठीक करें so that it doesn't catch any other infection और उसका आपके डायबिटीज को तकलीफ दे. Next important tip which is essential for managing diabetes in rainy season is to stay hydrated. अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेनी सीजन में क्या होती है कि बिकॉज द टेम्परेचर इज कूलर, बिकॉज देर इज नो हीट, वी डोंट फील थर्स्टी. ओके, प्यास हमें इतनी लगती नहीं है और हमें बार बार जैसे गर्मी में होता है हमें पानी पीने की इच्छा होती है, वैसे रेनी सीजन में नहीं होता. एंड दैट्स द रीजन me and my team always tell you, carry a water bottle or some kind of a thing which can help you improve your water intake. अगर आपके सामने पानी का ग्लास है, पानी की बॉटल है, तो यू विल बी 100% श्योर कि कहीं ना कहीं इट विल बी देयर, इट विल बी इम्प्रूव, क्योंकि आपके नजर के सामने इट इज ऑलवेज देयर. सो प्लीज एंश्योर ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, और एटलीस्ट some kind of a water tank or a मटका पानी का या कूलर, कुछ ना कुछ आपके आसपास है, that within a minute you can easily have a glass of water. क्योंकि अगर आप कहीं और है, किचन में पानी है, फ्रिज में पानी है, तो बाय द टाइम यू गो एंड ड्रिंक यू विल फॉरगेट, एंड इतना फीलिंग भी नहीं आएगा पानी पीने का, बिकॉज इट्स नॉट समर सीजन. योर बॉडी वोंट फील अ नीड ऑफ हाइड्रेशन, and that's the reason your water intake will be reduced. To improve and manage your HbA1c, to control your blood sugar levels, it is important that you constantly stay hydrated. Hydration is very very important. अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पानी ही पीना है. There can be a lot of alternatives which can help. जैसे रेनी सीजन में आपको अगर सूप लेना है, दाल लेनी है गरम गरम, वो आप ले सकते हैं. आपको अगर कोई भी टाइप की लेमन जूस, नींबू पानी लेना है विदाउट शुगर, वो आप ले सकते हैं. आपको ओआरएस सोल्यूशन लेना है, वो आप ले सकते हैं. बस दो चीजें अवॉइड कीजिए. सबसे पहला तो बर्फ इंड्यूस्ड या ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी एरेटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है. इसके वजह से बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाती है and your energy levels instantly go up because it has a lot of sugar in it. Okay, instead of just having plain water throughout the day, you can have a lot of health benefits by having infused water. मैंने जो आपको गर्म पानी का एक सोल्यूशन दिया, काढ़ा बताया, या जो डिटॉक्स वाटर है, हमारे पास काफी सारे डिटॉक्स वाटर के रेसिपीज है. So please talk to your health coach. She will give you a lot of detox water recipes, just to ensure कि आप healthy रह रहे हैं. मुझे जल्दी से मैसेज बॉक्स में बताइए, आपने कभी डिटॉक्स वाटर ट्राई किया है क्या? और अगर किया है तो कौन सा किया है, क्या क्या डाला है उस डिटॉक्स वाटर में? आई वुड लव टू नो.
I'm waiting for your responses for next 1 minute. How did you have your detox water? Do you know what is detox water? If yes, please drop in your recipes of how did you take your detox water. Wow, great. ओके, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया सुनीता जी, ग्रेट. ओके पांडुरंग जी, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूंगी. Yes, I would love to know how many of you have tried detox water. Do you know how it is used? Okay, no problem, Shrikant ji. I'll give you the recipe. Wow, Sanjeev ji, great. I hope ये टेस्टी भी है काफी और आपको अच्छा भी लग रहा है. Great. Okay. Lot of responses from all of you. Thank you so much for sharing your insights. I am having my dose of water. It is a lemon, just a slice of lemon in normal water, room temperature. It helps me keep hydrated. So it is nothing but lukewarm water and a slice of lemon. Great. All right, so I'll tell you a detox recipe which you can have in rainy season. It will help you improve your immunity. It will act as an immunity booster. It will keep you away from a lot of bacterial and overall infections. And it will also help you stay hydrated for a longer time, especially for rainy season. ये cucumber, lime, स्वीट लाइम, ऑरेंज, ये सारी चीजें मैं रेनी सीजन में आपको नहीं रेकमेंड करूंगी. इंस्टेड इंच ऑफ जिंजर. ओके, 1 इंच जिंजर आपको लेना है, वो आपको अपने पानी में डालना है. उसके साथ 4 से 5 पुदीना लीव्स आपको डालने हैं. उसके साथ ही अ स्लाइस ऑफ लेमन, बिकॉज लेमन हैज अ लॉट ऑफ विटामिन सी, एंड विटामिन सी is a natural antioxidant and a natural booster for keeping bacterial infections away. So एक स्लाइस ऑफ लेमन आपको लेना है और उसमें आप हल्का सा पिंच ऑफ जीरा पाउडर ऐड करेंगे. जीरा पाउडर ऐड करेंगे या फिर मेथी पाउडर ऐड करेंगे. इन दी एंटायर 1 लीटर, 1 लीटर का बॉटल है आपका, तो उसमें आपको ये सारी चीजें डालनी है. ट्राई दिस, इट टेस्ट नाइस. और अगर आपका पानी खत्म होता है तो उसी में रिफिल कीजिएगा. डोंट रिमूव ऑल ऑफ दैट. जिंजर एंड पुदीना इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. if you have cocktails, mocktails, or if you have had any time in your life, these two things are usually given so that वो एक tangy और थोड़ा सा after effect flavor आपको उसमें आए. तो ginger, inch of ginger, 5 to 6 pudina leaves, a slice of lemon and a pinch of jeera powder. ये 4 चीजें आपको ऐड करनी है in your water bottle and keep consuming it throughout the day. The best benefit will be seen when we have lukewarm water. तो नॉर्मल पानी नहीं लेना है. अगर थोड़ा आप गुनगुना पानी ले, इट इज गोइंग टू हेल्प यू improve your health. Okay, great. Please try this detox recipe and don't forget to update my team on what are the options you tried. Do you like it? Did you try it? Share us your photos on the chat box with my coaches and we'll be happy to see how do you have your rainy season detox, specially made to improve your immunity and to keep the bacterial infections at bay. All right, let's move on. Yes, we just discussed about these adding immunity boosting spices to your foods. Very very important. हम जब बीमार हो जाते हैं या हम जब when we are low on energy, most of the times we have dal khichdi or we have lentils, we have sprouts. Why is this? Because lentils, sprouts, combination of dal and rice boosts our metabolism and it improves our gut health.
so that our digestion is improved. Already, your body is struggling with a lot of climatic changes. In that, if you are not giving a boost to your metabolism, your gut health may get affected. Okay, so please understand, to have your gut health improved, it is very important that your digestion is under control. Okay, and hence काफी ज्यादा sprouts, काफी ज्यादा लेंटिल्स आपके खाने में होने चाहिए, मतलब दाल, जो स्प्राउट्स है वो, काफी सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने हैं, ठीक है, जैसे बाजरा, जवार, होल व्हीट फ्लावर, रागी, सोयाबीन, सत्तू, ये सारी चीजें खाने में आपको लेनी है. Yes. Now let us understand what are the dietary considerations for rainy season. We have to avoid consuming street food or unhygienic food as it may increase the risk of infections. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये मत सोचिए बच्चे खा रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स खा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी अलाउड है. इफ दे आर प्रोन टू द इन्फेक्शन 2 times, you are prone to infections 20 times. Please understand this, because the level of your immunity is 20 times less than them, and that's the reason you need to avoid unhygienic and street food, as it increases the risk of infections. Okay, increase your intake of vitamin C rich foods, because these foods will help you boost your immunity. अभी vitamin C में क्या खाना है? Let me tell you, Indians, lot of Indians are not aware about this. Guava is one of the richest source of vitamin C, and it needs to be consumed on a regular basis. Other than the common foods like oranges, lemons, mandarins, you know, all of these things are good. इसके अलावा और एक फ्रूट है जो काफी हाई है विटामिन सी में, स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज आर रियली गुड इन विटामिन सी. प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप रेगुलर बेसिस पे स्ट्रॉबेरीज का इंटेक करें. अगर अवेलेबल है आपके शहर में तो डेफिनेटली. Eat more warm and cooked foods. Please do not have raw vegetables or raw fruits. अगर आप fruits ले भी रहे हैं, उसको हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर में या हॉट वाटर में स्ट्यू कीजिए, या तो आप उसको बॉईल कीजिए. स्ट्यू बॉईल नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हॉट वाटर से वॉश कीजिए, so that whatever unhygienic factors of particular foods are there, that will be removed. Drink plenty of fluids. We have discussed this a lot, to stay hydrated. Basically, this will help you flush out your toxins from the body. Avoid consuming sugary drinks and opt for infused water or herbal teas. It is very important that we manage diabetes during the rainy season, because it requires a lot of extra care. Okay, by following the tips and strategies discussed, we can effectively manage your diabetes, and we will ensure that we are with you in this entire journey. Meanwhile, we are now a family of 1,25,000 users in the AccuCheck Wealthy program. Thank you so much for your responses. We are really overwhelmed, and we are really happy with the kind of enrollments and support we have seen in the last 2 to 3 months. Thank you so much for that. We have more than 45,000 users who absolutely love our program and adhere to it every single day. Our users lie in the age group of 18 to 85, and that's the reason we have groundbreaking clinical results. We are not a self-proclaimed organization. We are, Asia's largest innovator in diabetes management through virtual health. We are recognized by American Diabetes Association as the global innovator in diabetes from the year 2015. We are endorsed by Asia's largest diabetes association, first digital therapeutic for type 2 diabetes, and our real world studies. We have evidences of more than 60% of our users who have lost
1 to 2% of A1C, 2.36 kg of mean loss. Besides the human certified diabetes coach, you get to create a complete care team within the app. So you're guided every step of the way, backed with a complete care team right at your fingertips. It helps you learn how to help yourself in different situations, whether it's your religious aspects, whether it's hypoglycemia, hyperglycemia, celebrations at home, illnesses, hospitalization, frequent travels, all of these things. We are here to guide you, help you, motivate you throughout this entire rainy season. Don't be scared. Don't worry. जितना भी आप नमकीन खाएं, जितना भी आप ऑयली फ्राइड स्वीट खाना चाहें, please ensure the quantity is only fistful. Remember this. If we get craving, we are not saying no, but the quantity, when to eat it, how to eat it, is what me and my team are going to tell you. And if you adhere to it, we can ensure you आपके blood sugar पे इसका impact नहीं होगा. Okay. All right, that's all for today's discussion. I have a lot of questions in the chat box. Let me go through them and help you one by one. Great. So many active users. Thank you so much for your active participation today. कितने अलग अलग टाइप के डिटॉक्स ड्रिंक्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. ग्रेट. इसके फोटोज भी अपने कोचेस के साथ शेयर कीजिए. आई वुड लव टू सी आप किस तरह का डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं. Okay. Hi Rajesh ji, good evening. Thank you so much for your active participation. For vitiligo, doctor has suggested to avoid vitamin C fruits and lemon. What will be an alternative? Okay. So I'm so sorry, आपके केस के स्पेसिफिक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हेल्थ कोच से बात करें. We can have a discussion. You can have a discussion with her. I will guide her कि क्या क्या steps आपको follow करने हैं. विटिलिगो डायबिटीज मैनेजमेंट से काफी डिफरेंट है और उसमें विटामिन सी आइडियली नहीं रेकमेंड करते हैं क्योंकि उससे इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द विटिलिगो विच इज गेटिंग अफेक्टेड ऑन योर स्किन. ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या करना है, आप वन ऑन वन हेल्थ कोच से बात कीजिए. आई विल गाइड हर एंड शी विल टेल यू. Hello, Vivek ji. Good evening. Thank you so much for your active participation today. Vivek ji is asking, he needs to understand everything of today's class. Summing up today's class will help. Okay, great. So in today's class, we learn about two things: how to manage diabetes and your weight with in rainy season. Number one. Number two, we learned about two recipes, okay, which are health contributors. One was the healthy bhel, okay, and one was a spice immunity booster, okay, that was a detox water drink. Okay, please ensure you try both of these recipes. Talk to your coach. She will give you an overview of these. Very simple, very basic, but if you have these things regularly, आपके जो भजिया पकोड़े फ्राइड आइटम्स स्वीट आइटम्स खाने का जो क्रेविंग होता है वो इतना आपको नहीं होगा. या जो बारिश में हम काफी बार चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, तो वो सारा अवॉइड कर सकते हैं. That's the reason this is a personal immunity booster drink which I have shared. Please speak to your coaches. They will guide you on this further. Hello, Harshal ji. Good evening. I can see your question. Thank you so much for active participation today. Can we have crab soup? Definitely you can have crab soup, no problem. But एक ही चीज है, whenever we are making crab soup या आप कोई भी फॉर्म ऑफ सी फूड सूप के फॉर्म में ले रहे हैं, तो काफी बार उसमें फ्राइड क्रैब भी साथ में खाया जाता है एज अ स्टार्टर
और एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिश विद दैट सूप, तो वो नहीं करना है। सिर्फ सूप डेफिनेटली आप ले सकते हैं। उसमें फ्लेवर के लिए अगर आप गार्लिक ऐड करेंगे या जिंजर ऐड करेंगे, इट विल टेस्ट lot more better, and it will also help you improve your immunity and give you a lot of heat inducing substances in your body. So please go ahead with this, definitely a good and healthy option. All right, I have few more questions, let me go through them. Hello, Shaktidhar ji. Good evening. Thank you so much for your active participation today. Non-veg food in rainy season, any restrictions? As I am diabetic. Yes, there are restrictions. सबसे पहले तो fried fish, fried chicken, Chinese items नहीं लेने हैं, या ले रहे हैं तो महीने में एक आध बार लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है. एंड ल्यूकॉर्म वाटर आप ले रहे हैं, दैट इज रियली गुड. Okay, please speak to your coach. She will tell you what kind of a concoction you need to have. Only lukewarm water won't help. आपको अपने कोच से बात करनी पड़ेगी. उसमें काफी सारे पाउडर्स हम आपको सजेस्ट करेंगे, वो आप लीजिए, so that it can help you improve your blood sugar over a period of time. Hello, Mr. Chakravarti. Good evening. Thank you for your active participation today. Let me go through your question. Great. He has shared a personal recipe of buttermilk. He has shared in my buttermilk, I add a lot of powders, which include pinch of jeera, ajwain, methi, dry ginger, dalchini, turmeric powder every day in a glass of buttermilk. Wow! Please continue कीजिए. एक ही सजेशन है, बटर मिल्क चिल्ड मत लीजिए. समर में ठीक था, बट नाउ सिंस वी आर गोइंग टूवर्ड्स रेनी सीजन, please avoid having cold buttermilk and adding these powders. Try to have it at a room temperature. It will help. Hello, Manav ji. Good evening. I'm happy to see you after so long. I hope you're doing well. I haven't heard from you in some time. I hope your blood sugar is under control. No worries. Thank you so much for joining the session today. Yes, you can speak to your health coach. She will send you the link, recorded YouTube link of today's webinar. Please speak to her and she'll guide you on this. All right, let me go through some more questions. We have Mr. Anil. Good evening. Thank you so much for joining today's session. Your active participation is valued. How can we control infections during rainy season? Any medication? The best medication to improve your immunity is healthy eating. Please understand, daily basis पे आप जो 4 major meals ले रहे हैं, breakfast, lunch, evening snacks and dinner, ये चारों meals अगर आप healthy ले at least 6 days in a week, it is going to help you manage your blood sugars and keep infections away. Number 2, जैसे मैंने कहा है, आपका ब्लड शुगर रेगुलरली आपके एक्यूचेक मीटर के साथ चेक कीजिए. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, whenever there is a wound or a cut, ensure you immediately treat it. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर है रेनी सीजन में, काफी ज्यादा there is a lot of rain around you, do not try to go, so that you are not prone to infections. Next important thing, increase your intake of vitamin C. Vitamin C is a good potent which improves your overall health and helps you keep infections away. ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, आई एम श्योर मिस्टर अनिल, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टेक कंट्रोल of any kind of infections you are
getting scared of. Okay. All right. That's all for today. Thank you so much to all our lovely AccuCheck Wealthy family. It's been great connecting with each one of you. Next week, I'm getting a new speaker for you with a lot of information, lot of knowledge sharing, and a new topic. Meanwhile, take care of your health, ensure you eat healthy, follow all the tips to manage your diabetes and your weight and your A1Cs. If you have any questions, do reach out to my team. We are here to help you, guide you, motivate you. Till then, take care of your health. Bye bye.